Welcome to Kalinga Tutorial Balasar. So today I am going to teach you a approach, the first approach according to your syllabus, standing of yourself. Standing of yourself is the first approach of plus 2 first year Arts Science Commerce. So this title is very fascinating and learnable. Standing of yourself, which is written by Yevgeny Yevtushenko, the Russian author. Actually, at first, I am going to talk about the importance of this title. Why it is given? So, what is the meaning of title? Standing of yourself. So, life is combination of will and woe. आम जानिछु लाइफ रे दुख नथिले सुख आसेनी. Life is the combination of will and woe, or comedy and tragedy. Life is the combination of will and woe. Will and woe means sukha dukha. Sukha dukhara samahara hi जीवन. दुख अच्छे बोली तो सुख सुरक्षित. एटा हमको मानवा पड़े. We have to make a commitment that for our life. That means this is the part. दुख होची हम जीवन लो गोटे part जोटा कि सुख को आमंत्रण करे. तेणु ये सुख दुख भितर आमे आम निजर कैरियर को तैयारी करिथाउ. ठीक जेपरी स्टैंडिंग ऑफ योरसेल्फ इज रिटन बाय येवजेनी येवतुशेंको, द ऑथर. फ्रॉम द ग्रासरूट लेवल he had to suffer a lot. He had to go through a severe hardship. तेणु लेखक चाइल्डहुड रे से दुख नवा पड़ता कैरियर तैयारी करने. सो दैट इट इज वेरी इंपोर्टेंट टू रिमेंबर एवरीवन दैट विदाउट ट्रेजेडी देयर इज नो एनी टेस्ट ऑफ कॉमेडी. विदाउट हैप्पीनेस देयर इज नो टेस्ट ऑफ unhappiness. That means happiness, unhappiness, unhappiness, happiness, will and woe, both are associated with our lives. तो यह कहवा चाहिए आम जीवन में दुख सुख अच्छे. दुख पर सुख आसे, सुख पर दुख आसे. एटा गोटे पेरिनियल सिस्टम ऑफ आवर लाइफ. तेणु समस्त जीवन पर समान. ठीक से परी एमती गोटे अप्रोच स्टैंडिंग ऑफ योरसेल्फ निजे निजे गोड़े छिड़ा हवा विदाउट सपोर्टिंग एनीवन. इफ वन कैन मेक वन्स करियर दैट इज ग्रेट अचीवमेंट ऑफ लाइफ. तेणु जदि कहारी सपोर्टमेंट न नहीं आमे जदि आम लाइफ को तैयारी कर पारे ताले सेटा सबुठु गोटे बड़ा अचीवमेंट बोली भाविबा पड़े. Definitely, there are a lot of examples just before us. हम आगे बहुत example अच्छे. If we say APJ Abdul Kalam, गोटे example लबा APJ Abdul Kalam, who is a renowned figure in world. तो world रे गोटे renowned figure APJ Abdul Kalam, the greatest scientist in world. So in his childhood, he had to take a lot of pain and suffering just to make his career.
ତେଣୁ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରକୁ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଅଫ୍ ୟୋର ସେଲ୍ଫ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜ୍ଟାକୁ ଯିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ରସିଆନ୍ ଅଥର। So from his childhood he had to take a lot of sufferings. So now I am going to start the summary of the prose. The author was living alone in Moscow street. Moscow means the capital of Russia. When he was 9 years old. ତେଣୁ ଲେଖକ 9 ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲେ ସେ ମସ୍କୋରେ ଏକା ରହୁଥିଲେ। So it is very unbelievable to us, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନୁ। That means in this stage generally the 9 years child he needs affection and care from his parents. ଗୋଟେ 9 ବର୍ଷର ପିଲା ତେଣୁ ସେ ତା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ପାଖରୁ ତାର କେୟାର ଆଣ୍ଡ ଆଫେକ୍ସନ ହିଁ ନିଡ୍ସ କରେ। So when the author was 9 years old, but he was living in alone. That is the great point, that he could able to learn what is the meaning of life and what is the meaning of struggle. We know that, ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛୁ, struggle is life, stagnation is death. Struggle is life, stagnation is death. ସଂଗ୍ରାମ ହିଁ ଜୀବନ, ଜଡ଼ତ୍ୱ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମକୁ ବଡ଼ ହେବାକୁ ହେଲେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଲେଖକ 9 ବର୍ଷରେ ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲେ, when the author was only 9 years, he was living alone in Moscow street. So at that time his parents divorced. His father was living in Kazakhstan with his newly married wife. So that sometimes the author got letter from his father. ତେଣୁ ଲେଖକ ବାପା କାଜାଖସ୍ତାନରେ ରହୁଥିଲେ। ଲେଖକଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିଚ୍ଛେଦ ହେଲା, which was very painful to him. The author's mother was a geologist. Geologist means who works for our earth. He is called geologist. The author's mother gave up her profession. ଲେଖକଙ୍କ ମା କ'ଣ କଲେ, ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରଫେସନ ତାଙ୍କର ଥିଲା ବା ଜିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଥିଲେ ସେ ସେଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। So she sang for the troops of her country. She became a singer. ତାପରେ ସେ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗର ହେଲେ। ସ୍ପେଶାଲି ସେ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଶ ପାଇଁ ଶହୀଦ ହେଉଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଦେଶ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ ବା ଦେଶରେ ଥିବା ସୈନ୍ୟବାହିନୀ, ଆର୍ମି ଏବଂ ଯେତେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଦେଶରେ ଦେଶ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, ଦେଶ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦାନ କରୁଥିଲେ, ସେଇମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ଗୀତ ବୋଲୁଥିଲେ। The author's education was left. That means ଲେଖକଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ସବୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ ହେଲା। He was living alone. So he did not get any parental affection and parental guidance. ତେଣୁ ସେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ପାଖରୁ ଯେତିକି ସପୋର୍ଟ ପାଇବା କଥା ବା ଯେତିକି ଗାଇଡେନ୍ସ, ତେଣୁ ସେଇ ଜିନିଷ ସେ ପାଉନଥିଲେ। So I want to say that if we guide ourselves without anybody's care, definitely we will be great one day. ଆମେ ଯଦି କାହାରି କେୟାର ନ ନେଇକି ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜ ଗାଇଡ଼ କରିପାରିଲୁ, ତ ଡେଫିନେଟଲି ଆମେ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବୁ। It will be easy for us to reach our destination if you work hard and if you struggle for a better achievement. Like the author Yevgeny Yevtushenko, that who was living alone in Moscow.
So where the author was living, जोटी लेखक बास करते, so there was a boy named Red who was only 16 but who was an unsocial. तेणु लेखक जोटी बास करते से जड़े यंग मैन रोले ना हूँ रेड हु वाज अनसोशियल. So he walked masterfully on the way. That means his style of working is different from others. जो टाइम कहू गुंडा तेन गोटे अनसोशियल ता ना हूँ रेड. Everyone so in the city they had a great fear on red. तेणु सेठी समस्ते तांको बहुत भय ही करते रेड. So red, the physical posture of red is different from others. That he used to put on the caps just in a reverse way. तेणु रेड तार आम समस्ते जहाँ जमी सोशल वे कम करूँ से अनसोशियल मान ठीक था अपोजिट करते ठीक से प्रकार रेड. एंड देयर आर सम दैट जूनियर्स तेणु ता पछरे किसी जूनियर्स माने था रेड को सपोर्ट करते. सो देयर वर्क इज टू कलेक्ट मनी ऑन द वे. तेणु सेमानकर काम होला रास्ता रे लोक मान को अटकेबा ताकटू पैसा आदाय करबा. रेड पुट ऑन नकल डस्टर. तेणु रेड यूज टू पुट ऑन सब बेले से नकल डस्टर ही पिंधि आसता. नकल डस्टर that means generally the unsocials and the antisocial they use knuckle duster for their self defense. से माने गुंडा श्रेणी लोक माने साधारणतः नकल डस्टर को यूज करती जोटा कि तांकर सेल्फ डिफेंस पे. Besides, the author who was very small means 9 years old that he started writing a poem. लेखक गोटे कविता लिखा आरंभ कले. He started a poem about red. Especially he wrote a poem about red. The red was no doubt a notorious fellow, a hooligan, जोटा कि आम कहीपर होलिगन बोली. होलिगन बा गुंडा जोटा कहवा. नटोरियस द अपोजिट ऑफ फेमस. तेणु इल फेम्ड मैन को नटोरियस कह. दैट हिज आईज दैट लुकिंग लाइक केट्स आई तार आखि गुड़ाक ठीक भिले आखि बड़े. नो डाउट ही वाज ए वेरी नटोरियस फेलो इन हिज लोकालिटी. इन द मीन टाइम accumulating great confidence, the writer started writing a poem about red. This is important. लेखक तेणु से रेड विषय गोटे कविता लिखा आरंभ कले. So after writing, once the author met red on the way. तेणु लेखक रेड रास्ता रे देखा साक्षात देला. रेड got angry and Red told that to author that you are writing poem and have you written poem about me? And with a rough voice that Red made dealing with the author. Red beat the author severely, like black and blue. Black and blue means खूब जोरे बाड़ेगा. It is an important phrase. Black and blue.
The author was bedridden. So, in bed the author thought how to take revenge. This is important. That he got angry and he thought how to take revenge. Several days he was in bed and he had a great injury. So, after recovery, the author, in his memory land, he was in the hope of victory. ତେଣୁ ଲେଖକ ସେଇ ବେଡ୍ ରିଡେନ୍ ଥିଲା ସମୟରେ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ କେମିତି ରିଭେଞ୍ଜ ନେବେ ଏବଂ କେମିତି ଜିତିବେ. So important is that if we determine just to win in our life, definitely we can win. It depends on our strong determination. ଆମେ ଯଦି ଲାଇଫରେ ଚାହିଁବା ଯେ ହଁ ମୁଁ ଜିତିପାରିବି, ତେଣୁ ଏଇ ମନୋଭାବ ଯେଉଁ ପିଲାର ରହିବ ଡେଫିନେଟଲି ସେ ଲାଇଫରେ ଜିତିପାରିବ ଆଣ୍ଡ ହି କ୍ୟାନ୍ ଟଚ୍ ହିଜ୍ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ପରଫେକ୍ଟଲି ଏବଂ ସେ ତା ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ପରଫେକ୍ଟଲି ଟଚ୍ କରିପାରିବ. ଠିକ୍ ଅଥର ଆଫ୍ଟର ରିକଭରି ହି ୱେଣ୍ଟ ଟୁ ଦ ଜିମ୍ ସେଣ୍ଟର ଟୁ ଡେଭଲପ ହିଜ୍ ମସଲ୍ ପାୱାର. That means he had an idea how to defeat red. ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କଥା ରହିଲା ଯେ ରେଡ୍କୁ ମୁଁ ଯେମିତି ହରେଇବି. So that he went to the gym center and he only for the practice of developing his muscle power. Wrestling, you know that generally in gym center different, that means equipments are there to develop our muscle tight. So that the author used to do the different exercise in the gym center to develop his muscle power. Besides, he followed a book, Jiu-Jitsu. The name of the book is Jiu-Jitsu. It is a Japanese book. Jiu-Jitsu is a Japanese book. The book is for only how to do different techniques in fighting. Then jette so fighting skill se bohire hi gayi. Generally we know that the Japanese are very strong and they are well trained in fighting. If they are slim, but they are very expert in fighting. Japanese माने बहुत expert fighting रे. So माने बहुत slim देखा जाते किंतु fighting रे बहुत निपुण से माने. ठीक से परी से Japanese book जो Jiu-Jitsu, the book is only for the technique of fighting. The author followed the book to know the different technique how to defeat red. Red was, that means all the people in his locality, से locality रे जितने सब लोग समस्त रेड को बहुत भय करते and the step taken by author, the people got happy. लोक खुशी हेले जेतले रेड विरुद्ध रे इस स्टेप लेखक नउतले से खुशी हेले. So after some 3 weeks the author felt comfortable. Then he decided to go out. तेणु किसी सप्ताह पर से लेखक कौन कले ना बाहर को जीवा पे डिसाइड कले. So one day he saw that red was playing the playing cards with his colleagues or friends in the lawn. Lawn means घास घास पड़िया जोटा कहबा घास गालीचा जोटा कहबा lawn. तेणु ये लॉन उपर बसी रेड विथ हिज एसोसिएट्स तंग संग माने सब मिसिक प्लेइंग कार्ड खेलुथला रे द ऑथर वेंट देयर. सो टू मेक एन इश्यू और टू स्टार्ट एन इश्यू द ऑथर किक्ड द प्लेइंग कार्ड्स. तो जेहेतु
लेखक रिभेंज नापी जाते तेणु गोटे इश्यू करने से आगे कौन कले रेड जो तो सांग मान सहित प्लेइंग कार्ड से लॉन उपर बस खेलुले से गोटे किक कले सो रेड गॉट एंग्री रेड severely got angry and red tried to beat to author but it was in vain तेणु रेड लेखक को बढ़िया चेष्टा करता but it was in vain very tactfully very cleverly the author handled the situation and red was moving like an maiden bull तेणु the author won and he got happy तेणु लेखक आ रेड भितर जो फाइटिंग चलला एवं ता भितर रेड हारीगला एवं लेखक जीतिले सिंस दैट डे एवं रेड हारीगला परे जस्ट हिज हॉटीनेस and his that means नट्रिटी जोटा कहवा धीरे धीरे कमिया को लगे एवं लोक मान जो भय था रेड प्रति एवं आ भय भी रहा द ऑथर न्यू दैट डेफिनेटली वी ऑल विन इन आवर लाइफ इफ यू डिटरमाइन ग्रेटली तेना लेखक से कहले डेफिनेटली आम जदि आम पाखे से डिटरमिनेशन थी ताले आम जीति पार सब क्षेत्र में जीति पार सो आफ्टर दैट ही बिकेम ए ग्रेट पोएट ग्रेट डायरेक्टर जर्नलिस्ट एंड ए ग्रेट ऑथर तापर से जो लेखिबा आरंभ होता पोएम धीरे धीरे से गोटे भल जर्नलिस्ट हेले भल डायरेक्टर हेले गोटे भल ऑथर हेले एवं गोटे भल पोएम हेले सो दैट in conclusion I want to say that standing up yourself ये जो टाइटल निजे गोड़र निजे छिड़ा हवा कहारी साहाय्य न नहीं कहार सपोर्ट न नहीं निजे छिड़ा हवा दैट मीन्स इफ वी स्ट्रगल a lot definitely we get a good result तो आम लाइफ रे जति स्ट्रगल करबा संग्राम करबा आमको गोटे भल फलटे मिल आमको से विश्वास रखा पड़ो गोटे भल फलटे मिल सो टू रन विथ ए ग्रेट डिटरमिनेशन विल इन्वाइट यू डेफिनेटली टू टच योर डेस्टिनेशन दिस इज इम्पोर्टेंट तेणु टू रन विथ ए ग्रेट डिटरमिनेशन आमको दौड़ा पड़ो लाइफ रे एवं विथ ए ग्रेट डिटरमिनेशन एवं आम मन भितर सेमती गोटे आत्मबल जोटा कहवा डिटरमिनेशन रहिले आम निश्चय सफलता पाइपर बा आम आम गोल बा आम लक्ष्य पहुँची पार लाइफ इज जनरली स्टार्टिंग विथ ए विजन आम जो जन्म हो बा आम समस्त मन भितर गोटे विजन थाए किंतु आम समस्ते ठीक जगह पहुँची पार सो lack of confidence and lack of courage and lack of determination ये जो तीन टा जिनस तो आम गोटे कॉन्फिडेंस रहा दरकार यस आई कैन डू ए लॉट जदि इच एंड एवरी स्टूडेंट तांका मन को एवं तांका मन रे पॉजिटिवनेस डेवलप हुए जे मु बहुत किसी करि परिबी विदाउट एनी सपोर्ट फ्रॉम अदर्स जे काहारी सपोर्ट न नहीं मु बहुत किसी करि परिबी इफ यू सेट अप इन योर मेमोरी लैन तुम मेमोरी लैन ले जदि इटा सेट हो जाए डेफिनेटली तमें लाइफ रे विन कर लाइक द ऑथर सो थ्रू दिस प्रोच ए प्रोच माध्यम रे तो आम एतिक जानिलु बा एतिक शिखेलु दैट स्ट्रगल इज इम्पोर्टेंट इन एवरीवन्स लाइफ प्रत्येक को जीवन ले संग्राम करबा सेटा होची very important without hard work without hardship and without pain it is very difficult to be a great life रे गोटे ठीक जगह पहुँचा गोटे बड़ हाँपी
तो आम बहुत ऑब्स्टेकल फेस करिया पड़े वी हैव टू फेस अ लॉट ऑफ ऑब्स्टेकल्स एंड वी हैव टू फेस अ लॉट ऑफ हिंड्रेंस इन आवर लाइफ सो फॉर द बेटर अचीवमेंट तेणु बेटर अचीवमेंट पाई वी हैव टू डू हार्ड वर्क इज the true essence of life. So without hard work, one cannot do good result. तेणु तमें ए प्रोज माध्यम रे तुम समस्त को एतिकी एडवाइस करबी कि जस्ट डू योर वर्क प्रॉपर्ली एंड यू हैव टू फॉलो दैट योर सोल्स वॉइस दैट मीन्स इट इज इंपोर्टेंट फॉर एवरीवन्स लाइफ सोल्स वॉइस मीन्स जोटा कहवा हमर आत्मार स्वर इफ आवर सोल्स वॉइस इकोज विथ ए डिटरमिनेशन डेफिनेटली विल बी ए ग्रेट पर्सन्स इन फ्यूचर तेणु आम आत्मार स्वर जदि बा अंतरात्मा को साक्षी रखी आम जदि मनरे गोटे दृढ़ता आणु बा मन को दृढ़ करूँ मु निश्चय मो लक्ष्य पथरे पहुँची पारि ताले मैं निश्चय पहुँची पारि तेणु अथर ए प्रोज माध्यम गोटे भल संदेश देइचंती जे एते छोट एज रु 9 वर्ष जो से होते एका रोते ताले यू आमको जना पड़ा जे आम आज के डेट्रे जब गोटे कंपेयर करें गोटे 9 वर्ष पिला एका से कौटी गोटे रही पारे विदाउट पेरेंटल एफेक्शन विदाउट पेरेंटल गाइडेंस इट इज वेरी डिफिकल्ट टू दैट लिव इन एलोन सो जोटे कि अथर 9 वर्ष बेले मस्को एका रोते सो दैट ही लर्नड दैट ब्रेवरी तेनाली गोटे जिनस से एका रही भितर शिखिले कौन ना साहसिकता जोटा कहवा सो हिज कॉन्फिडेंस डेभलप धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ला तेणु साहसिकता बढ़ला एवं समय आसला से रेड को हर गोटे बड़ मनीष हो पारे तेणु आम जब चिंता करवा अथर से चाइल्डहुड पीरियड डेफिनेटली द चाइल्डहुड वाज वेरी दैट पैथेटिक दैट he could able to avoid that means the hardship so through his patience तेणु गोटे धैर्य माध्यम से समस्त हार्डशिप को अतिक्रम कर ठीक जगह पहुँच पारे यहाँ हूँ टोटाल जोटा स्टैंडिंग अफ योरसेल्फ रे समरी मुझे डिस्कसन कली एवं ए समरी माध्यम कौन कौन आम शिखिलु एवं केमिति आम डेस्टिनेशन पहुँचबू जोटा कि मु प्रकाश कर